excretory products and elimination, and the topics involved. These are the excretory products, their elimination, modes of excretion, monotelism, ureotelism, uricotelism, human excretory system, its structure and function, especially the structure of kidney and nephron, urine formation, osmoregulation, regulation of kidney function, renin-angiotensin, atrial natriuretic factor, role of erythropoietin, disorders of the excretory system, uremia, renal failure, renal calculi, nephritis, and dialysis and artificial kidney. So this is the scope of syllabus, means these that points you have to study in detail. So what is the excretion? Actually, excretion is the process of the removal of waste product from our body. So the process of removal of metabolic waste from the body, this is known as the excretion, and the regulation of its solute and water, that movement is taking place by the osmosis. तो ये जो सोल्यूट और वाटर का मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, वो होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और उसके थ्रू ही जो है वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव होता है. अब ये जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि जो एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे accumulate many excretory product like ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions also like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate. Okay, these are the waste product. They are produced due to the metabolic activity, and these substances, they are removed by the animals. So on the basis of the excretory product which are removed by the body of animals, there are the categories of the animals, or we can say the types of that excretion. So there are three types of that process of excretion here. On that basis, the category of the animals is there. The first is their monotelism. Okay, in this process what happens, the ammonia is excreted. Okay, so many bony fishes like aquatic amphibians and aquatic insects, means mainly the aquatic organisms, they are amonotelic in nature. Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surfaces, like in fish, as ammonium ions. Kidneys, they do not play any significant role in its removal. The second is there, this is ureotelic. So terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water. Mammals, many terrestrial amphibians, marine fishes, mainly they excrete the urea, and they are known as the ureotelic animals. Ammonia produced by the metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidney. So the animals, those who excrete urea as the excretory product, they are termed as the ureotelic animals. And next is their uricotelic, means here the excretory product is uric acid. Reptiles, birds, and land snails, insects, they excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with the minimum loss of water, and these animals, they are known as the uricotelic animals. So amonotelic, ureotelic, uricotelic, these are the three categories of the animals on the basis of the waste product excreted by them. Now, excretory organs, yes. So excretory organs are also different in different organisms, like protonephridia or flame cells. These are the excretory structures in the platyhelminthes like flatworm, planaria, rotifers, and some annelids, and cephalochordate like Amphioxus. Nephridia, these are also the excretory structures found in the earthworm and other annelids. Malpighian tubules, they are the excretory structure in most of the insects, including the cockroaches. You know, you have studied about the Malpighian tubules in cockroaches. Antennal glands or green glands perform the excretory function in the crustaceans like prawns. Now we will come to the structure and function of the human excretory system. So
In humans, the excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of kidneys here, and then a pair of ureters. These are the ureters, means ureters which are connected from kidney to the urinary bladder. The next is the urinary bladder, and the last part is the urethra. So we will study about the detail of the urinary system, which is in the human being called as urinary system also. This excretory system in the human being called as urinary system also, because it produces excretory product urine. Now we will study the structure of the uh, kidney, internal and external structure, then ureters and urinary bladder. So kidney, these kidneys are they are reddish brown bean shaped structure situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebrae, close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. So kidney, they are being that reddish brown bean shaped structure and located between the levels of last thoracic and third lumbar vertebrae. Each kidney in adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width, and 2 to 3 centimeters in thickness, with an average weight of 120 to 170 gram. Now here the position of the kidney, when we see, you can see here that the left kidney is little higher than the right one. So this is the left kidney and this is the right kidney. So left kidney is being little higher than the right one. What is the reason here? In order to that uh, means allow the liver to give the space here, means यहाँ पर जो है राइट साइड जो लीवर की पोजीशन होती है, तो लीवर जो है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, इसलिए जो है राइट किडनी जो है स्लाइटली इट इज बीइंग लोअर. And only in human beings the right kidney is slightly below the liver, below the left, but in other that mammals, for example rabbit, the left kidney is below the right. So this is the about the position of the kidneys. So a right kidney is being little lower than the left one in order to accommodate the liver there. Then next we will come to the internal structure of kidney, the outer layer of the kidney and the inner layer of the kidney. Before that I will show you the general structure that from the kidney. You can see here that the elongated tube arising, these tubes they continue downside and open into the urinary bladder, and urinary bladder it opens outside through the urethra. Now one by one we will study the detail. So these all I have explained you, that the position of the kidney and the general features of the kidney, length and width, everything. Now towards the center of the inner concave surface of the kidney there is a notch called hilum, through which the ureter, blood vessels and nerves enter. So you can see here that this is the notch which is termed as the hilum, and here from the hilum that ureter, blood vessels and nerves, all they enter. Inner to the hilum there is a broad funnel shaped space called as the renal pelvis. तो यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रक्चर है वो है रीनल पेल्विस, जो हाइलम के इनर साइड होता है. और फर्दर इसके अंदर होते हैं प्रोजेक्शंस. ये प्रोजेक्शंस जो होते हैं दे आर नोन एज द कैलेसिस. यू कैन सी कि यहाँ पर प्रोजेक्शन है, ये जो प्रोजेक्शन है ये क्या है, रीनल कैलाइसिस. द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज बीइंग टफ एंड कैप्सूल. जो आउटर लेयर है वो होती है टफ कैप्सूल, and inside the kidney we will see there are the two zones, an outer cortex and inner medulla. So जो outer lighter region होता है that is being the cortex, और जो inner जो है light region, dark region होता है, sorry, which is known as the medulla, same as we study in the brain also. और जो outer जो tough layer है कैप्सूल की यहाँ पर this is made up of थ्री लेयर. जो आउटर लेयर है किडनी की, आउटर मोस्ट होती है रीनल कैप्सूल,
यहाँ पर तो रीनल कैप्सूल जो है 3 लेयर्स में, ये रीनल कैप्सूल जो है वो इनर मोस्ट है, टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग है, मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। रीनल कैप्सूल के बाहर की तरफ जो मिडिल लेयर है दैट इज एडिपोज कैप्सूल। एडिपोज कैप्सूल हैज द एडिपोज टिश्यू एंड एक्ट एज द शॉक एब्जॉर्बर। और आउटर मोस्ट जो है इस पूरी कवरिंग के अंदर वो है रीनल फेसिया, विच इज द आउटर मोस्ट फाइब्रस कवर लिंकिंग इट विद द एब्डोमिनल वॉल। तो इस तरीके से जो रीनल कवरिंग है इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, आउटर मोस्ट रीनल फेसिया, मिडिल एडिपोज कैप्सूल एंड इनर मोस्ट इज द रीनल कैप्सूल। तो ये हुई उसकी कवरिंग। देन इट इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। Further, medulla is divided into few conical masses. These are known as the medullary pyramid. So you can see here, these are the conical masses. These are, yes, excuse me. These are known as the medullary pyramids. प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस। तो ये जो कैलिसेस हैं, ये जो रीनल पिरामिड है, ये कहाँ प्रोजेक्टेड होते हैं? ये कैलिसेस में होते हैं। तो यू कैन सी दीज ऑल आर द कैलिसेस। इन कैलिसेस के अंदर जो है ये रीनल पिरामिड जो है ये प्रोजेक्टेड होते हैं। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड इज नोन इन एज द रीनल कॉलम्स कॉल्ड द कॉलम्स ऑफ पर्टिनाई। अब ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है ये पिरामिड्स के बीच तक जो है ये एक्सटेंडेड रहता है, इसे हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ पर्टिनाई और रीनल कॉलम्स। ओके, so these are the internal structure. You can see here that through the that hilum, renal artery and renal veins, they are entering, and also the ureter is also connected through the hilum, and then it is going to the renal pelvis. Now internal structure we have studied. रीनल पिरामिड का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो जो रीनल पिरामिड होता है इट हैज अ ब्रॉड बेस टुवर्ड्स द, अच्छा ओके, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन एंड ऑल दैट इज शोन हियर। तो जो रीनल पिरामिड्स होते हैं उनके कॉनिकल सरफेस होता है और एक ब्रॉड सरफेस होता है। तो जो ब्रॉड सरफेस होता है वो कॉर्टिकल की साइड में होता है। यहाँ पर देखोगे आप, ये जो ब्रॉड सरफेस है ये कॉर्टिकल की साइड पर है, और जो एपेक्स है वो पॉइंटेड होता है, दिस इज नोन एज द पेपिला। आई विल शो यू हियर, इट इज बेटर आई विल शो यू इन दिस डायग्राम बिकॉज ये एनिमेशन के कारण कंटिन्यूअस नहीं दिखा पा रही हूँ मैं। तो यहाँ आप देखोगे कि जो ये इसका जो ब्रॉड बेस है ये बेस कहाँ है? कॉर्टेक्स की तरफ है, और जो एपेक्स होता है वो पॉइंटेड होता है। तो ये एपेक्स है और ये बेस है। एपेक्स जो है pointed है, this is known as the renal papilla, and 1 to 3 renal papillae projected into the cavity known as the minor calyx। तो ये projected होते हैं minor calyx में, और ये जितने भी minor calyx हैं they together form a larger that cavity that is known as the major calyces। An interstitial fluid of the medulla region has high osmotic concentration equal to some 1200 osmolarity per liter due to this high that quantity of solute sodium chloride and urea। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मेडुलरी रीजन है इसकी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो हायर होती है। देन कॉर्टिकल रीजन विच इज क्लोज टू द मेडुला। अब नाउ ये है कॉर्टेक्स एंड दिस इज द मेडुला। तो जो कॉर्टिकल रीजन है मेडुला से क्लोज होता है, दिस इज नोन एज द जक्स्टा मेडुलरी रीजन। ओके, तो कॉर्टिकल रीजन के क्लोज वाला मेडुलरी रीजन को जक्स्ट्रा मेडुलरी एरिया कहते हैं। एंड मेजर कैलिसेस जो है वो ब्रॉड फनल शेप एरिया में ओपन होते हैं जिसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। जो रीनल पेल्विस आई शोड यू, एंड इट इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड इट लीड्स इनटू द यूरेटर। तो रीनल पेल्विस जो है वो यूरेटर के अंदर ओपन होता है। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर that is ureters and urinary bladder. So this is the internal structure. You can see here that hilus is there. Internally the structure and functional unit of kidney, this is known as the nephron. So I will discuss nephron in the next slide. Before that I will show you the ureters and urinary bladders. So in the ureters and urinary bladder we will come to the same diagram again here, that ureters are a pair of fine
white distensible muscular tubes of 25 to 30 centimeter in length, and ureters develop from the hilum part of the body. तो hilum से जो है वो ureter develop होते हैं, descend along the abdominal wall, and they bend obliquely inwards and upward to open into the urinary bladder in the region of ट्राइगोन बाय ऑब्लिक्स दैट स्लिट्स. तो इनकी जो यूरेटर्स की ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर में, ये ओब्लिक स्लिट्स के थ्रू होती है. जो यूरेटर्स हैं, दे हैव द 3 coats, एक्सटर्नल adventitia, middle muscular and inner mucosa. Ureter, they are always undergoing peristalsis which help in the passing urine from kidney to bladder. तो किडनी से ब्लैडर तक को जो है यूरिन पास करने के लिए तो यूरेटर के अंदर जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है. देन यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये मीडियन pyriform sac होता है which varies in shape, size and position according to the amount of urine collected, and it is fully distended bladder when it it is being fully distended when it collects the urine and becomes ovoid in outline. Bladder also has the 3 parts. अब bladder के भी 3 parts होते हैं. I will show you in this diagram here. This is the urinary bladder. 3 parts होते हैं, apex, fundus एंड नेक. तो इसकी जो बॉडी होती है, दिस इज बीइंग द ट्राइगोन ना, ट्राइंगुलर बॉडी होती है, एंड इट हैज द ओपनिंग ऑफ द यूरेटर्स हियर. ये यहाँ पर 1 एंड दिस इज द सेकेंड. ये 2 ओपनिंग है यूरेटर्स की, एंड एन इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस. जो यूरेथ्रा है दैट ऑल्सो हैज द ओपनिंग हियर, दैट इज थ्रू द यूरेथ्रल ओरिफिस. और जो नेक रीजन होता है इसका, इसके अंदर होते हैं 2 इंस्पेक्टर्स, इनवॉलेंट्री इंटरनल इंस्पेक्टर एंड वॉलेंट्री एक्सटर्नल इंस्पेक्टर. जो एक्सटर्नली है वो वॉलेंट्री इंस्पेक्टर्स होते हैं, एंड नेक ऑलवेज लीड्स इनटू द यूरेथ्रा. तो ये नेक वाला रीजन है दैट लीड्स इनटू द यूरेथ्रा, एंड दिस इज द मेन बॉडी. अब यूरिनरी ब्लैडर जो है इसकी क्या स्पेशलिटी होती है कि ये जो है स्पेशल टिश्यू का फॉर्म होता है दैट इज नोन एज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ओके, सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ है. तो ये जब फुल्ली फिल्ड होता है तो ये जो है डिस्टेंडेड फॉर्म में होता है. अब ड्यूरिंग द मिक्ट्यूरेशन बोथ द इंस्पेक्टर्स दे अंडरगो रिलैक्सेशन, एंड cerebral cortex directs the inspector to relax and person undergoes urination, and wall of the urinary bladder is innervated by the sympathetic and parasympathetic nervous system. Then we will come to the urethra. Urethra, it is present only in mammals. It starts from the neck of the urinary bladder, opens outside the body. In female, it is being the short one, straight and concerned with the release of urine through an aperture called the urethral orifice or urinary aperture. But in the male, it is being quite long, passes through the prostate gland, Cowper's gland, and it is concerned with the release of urine as well as the semen. So this is all about the structure of excretory system here. General kidney, external and internal structure. Here most important diagram in the kidney, that is the vertical section of the kidney. Now we are going to study about the nephron. Nephron or uriniferous tubule. ये जो nephron you can see here, this nephron is the structural and functional unit of the kidney. So there are many nephrons present, means number of the nephrons present in the kidney. They are the structural and functional part of the kidney, and each nephron consists of 2 parts, glomerulus and renal tubule. So this is glomerulus, and the tubular part which is connected to it, that is known as the, these all are the nephrons. So this is known as the renal tubule. I will show you further here the structure of the nephron. Now nephron or uriniferous tubule is made up of 2 parts. The first I said you, that is the glomerulus, and second is the renal tubule. So this glomerulus further continues as the tubule which is known as the renal tubule. What is glomerulus? Glomerulus is actually a tuft of capillaries formed by the branching of efferent arterioles, which is a fine branch of renal
arteries. So this is the efferent arteriole. Efferent arteriole, they are formed from the branching of the renal artery which enters into the kidney. Glomerular capillaries join to form efferent arteriole. अब ये जो efferent arteriole है, it further forms the bunch of the capillaries, and this bunch of capillary they unite and then it forms the efferent arteriole. Now renal tubule, it begins with the Bowman capsule and which encloses the glomerulus. अब Bowman's capsule क्या structure होता है? Let me see here. Bowman's capsule is a blind double walled cup shaped structure. This is the Bowman's capsule, cup shaped structure, and two walls of Bowman's capsule are inner visceral and outer parietal. इसकी जो walls होती हैं, they are thin layer, means single layered and thin layer, and supported over the basement membranes. फर्दर जो इसकी इनर वॉल होती है बोमेंस कैप्सूल की, ये स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती है एंड स्पेशलाइज पोडोसाइट्स होते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट के अंदर. तो जो पेरिफेरी पर है वो स्क्वेमस एपिथेलियम है इनर वॉल के अंदर, और स्पेशल सेल्स होती हैं, दे आर नोन एज द पोडोसाइट्स. पोडोसाइट हैज अ नंबर ऑफ इंटरडिजिटेटेड इवेजिनेशंस कॉल्ड द पेडी सेल्स और फीट. अब ये जो पेडी सेल्स होते हैं, they rest on the basement membrane and they enclose slit pores और filtration slits. तो इसके अंदर होते हैं slits या filtration pores होते हैं जिसके थ्रू जो है जो फ्लूइड है वो पास आउट होता है. और आउटर जो लेयर होती है बोमेंस कैप्सूल की, दैट इज पेराइटल लेयर. ओके, इनर लेयर एंड आउटर लेयर, टू लेयर्स आई एम टॉकिंग. और ये है इनर लेयर एंड दिस इज द आउटर लेयर. और आउटर लेयर जो होती है ये फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है, और इसके बीच में जो स्पेस है बिटवीन बोथ दैट लेयर्स, दिस इज नोन एज द ल्यूमिन और कैप्सुलर स्पेस. तो इनर वॉल और आउटर वॉल के बीच में जो स्पेस है वो कैप्सुलर स्पेस है. तो this is all about the Malpighian capsule. This is known as the renal capsule also, Malpighian body also. Now this Malpighian body or renal capsule further continued as the part of the renal tubule. अब renal tubule के अंदर फिर से हम देखेंगे कि renal tubule जो है वो 3 parts में divided है. Proximal convoluted tubule, then loop of Henle, that is Henle's loop, and the distal convoluted tubule. 3 parts में ये divided है. So proximal convoluted tubule जो है, it starts from the lower part of the Bowman's capsule, and this is present in the cortex. It is highly coiled, surrounded by peritubular blood capillaries. तो ये आपको यहाँ पर दिख रही होंगी जो blood capillaries हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं पेरीट्यूबुलर के. तो ये जो पीसीटी है या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है एंड सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज. पीसीटी इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो जो पीसीटी की वॉल है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है, हैविंग ब्रश बॉर्डर्स विद लॉन्ग माइक्रोविलाई फॉर इंक्रीजिंग द एब्सॉर्प्टिव एरिया. And the cells contain abundant mitochondria also and food reserve also for providing energy to perform active absorption and secretion. Then we will see the loop of Henle. Loop of Henle, you can see the hairpin loop like globular part is there. This is loop like structure, U-shaped structure, which descends into the renal medulla. तो जो PCT है वो कहाँ पर located है? Cortex में. Loop of Henle or Henle's loop कहाँ located है? Renal medulla. Loop of Henle is made up of 2 parallel limbs joined by the curved base. और कौन कौन सी हैं? ये है descending limb of loop of Henle and this is the ascending limb. तो ये है ascending limb and this one is the descending limb of loop of Henle. Both are connected by the that curved base. Then we will come to the distal convoluted tubule. This distal convoluted tubule, this is termed as the DCT also. जो ascending limb है loop of Henle की, यहाँ पर this is the ascending limb. Ascending limb जो है further continue कैसे होती है? Distal convoluted tubule DCT. DCT is highly coiled part of the nephron and lies close to the Malpighian body.
Collecting ducts. Next, we will come to the collecting duct. So you can see here, this is the collecting duct. So DCT of many nephrons open into a straight tube. This straight tube is known as the collecting duct, and many of which converge and open into the renal pelvis through medullary pyramid into the कैलाइसिस. तो ये कैलाइसिस के अंदर ओपन होती है, माइनर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस, एंड देन द रीनल pelvis. So they open into the calyces, and the collecting ducts enter medulla and form ducts of Bellini. तो यहाँ से जो collecting ducts है वो medullary region में enter करती हैं, and then they are termed as the ducts of Bellini. So understood, क्योंकि distal convoluted tubule भी जो है ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होगा, लूप ऑफ हेनले मेडुलरी में होगा, पीसीटी ये भी कॉर्टिकल रीजन में होगा. देन यू विल सी मेनी ऑफ दैट कैपिलरीज, दे आर सराउंडिंग द loop of Henle and the nephron here. So the efferent arteriole which is emerging out from the glomerulus, it forms a fine capillary network. तो efferent arteriole जो है ये एक fine network बनाता है around the renal tubule. So these are known as the peritubular capillaries, and a minute vessel of this network runs parallel to the loop of Henle also. तो यहीं से एक minute जो है कैपिलरी अराइज होकर के पूरा लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग में एक नेटवर्क बनाती है, और ये जो यू शेप्ड नेटवर्क होता है लूप ऑफ हेनले के अराउंड, दैट इज नोन एज द वासा रेक्टा. यू कैन सी हियर, दिस इज वासा रेक्टा. Vasa recta is absent or highly reduced in the cortical nephrons. जो cortical nephrons होते हैं उसमें ये reduce होता है vasa recta. So these are the the important points of the nephron. So students, we will study the next part of it in the coming class. After this, the physiology of urine formation and all that. Now, if you have any problem, that we will discuss.